जनपदे वैष्णवी देव्याः मन्दिरे 96,00,000 यात्रिणः गतवन्तः। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ NPS जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद है अर्जुन चौधरी। Coal production in the country has shot up to over 664 million tons during the current financial year. Agri-exports have increased substantially from around 13% in 2014-15 to over 25% in 2022-23. And NSE Nifty and BSE Sensex hitting new all-time highs. Sensex gains 372 points. Nifty closes at 21,779 points. देश में चालू वित्त वर्ष में कोयले का उत्पादन बढ़कर 664 मिलियन टन से ऊपर पहुंचा। देश का कृषि निर्यात वर्ष 2022-23 में वर्ष 2014-15 के 13% की तुलना में बढ़कर लगभग 25% के आसपास पहुंचा। और घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला जारी। सेंसेक्स और निफ्टी एक और नई ऊंचाई पर पहुंचे। सेंसेक्स 372 अंक उछला, निफ्टी 21,779 पर हुआ बंद। देश में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन बढ़कर 664 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 12.9% अधिक है। पिछले वर्ष इस अवधि में 591 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। कोयला मंत्रालय ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि कोयला भेजने के आधार पर इस दौरान सकल 692 मिलियन टन कोयला अभी तक भेजा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.32% अधिक है। अप्रैल 2023 से 25 दिसंबर 2023 के बीच बिजली उत्पादन के लिए 8.39% अधिक कोयले की खेप भेजी गई है और ये 577 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया है। एक उल्लेखनीय खबर कहें मैम? जी बिल्कुल, कोयला उत्पादन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि। देखिए, हम जब ऊर्जा की बात करते हैं हमारे देश में तो लोग तेल की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा नेचुरल रिसोर्स जिससे हमें ऊर्जा मिलता है वो है कोयला। और कोयला खैर इसमें काफ़ी कुछ हानिकार भी है क्योंकि पोल्यूशन की तकलीफ है, लेकिन फिर भी कोयला हमारे कई पावर जनरेटिंग प्लांट्स
का फीड स्टॉक है और कोयला हमारे रेलवेज़ में चाहिए होता है, तो कोयला एक बहुत ज़रूरी पदार्थ है। तो उसकी जो उत्पादन बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कोयले की उत्पादन से, जैसे मैंने कहा कि ये पावर जनरेटिंग प्लांट्स, थर्मल पावर जनरेटिंग प्लांट्स को चाहिए। और पोल्यूशन की बात अगर हम करें तो कोल वॉशरीज काफ़ी हमने बनाए हैं और पोल्यूशन को इसकी इमिशंस कम करने के लिए काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स किए गए हैं। हालांकि हाँ, लॉन्ग टर्म में हमें फेज आउट तो करना ही पड़ेगा कोयला, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म। What are the other benefits that we see from coal? You mentioned about coal washing as a way to mitigate Yes. any kind of poisonous effluents from coal, especially damage to the environment. But there's also the argument that, you know, India requires energy. Yes. And this is the most viable way to secure our energy future, while at the same time you have protective measures as well. So is coal also promoting alternative means of energy? I can't say it's really promoting, but the fact is that precisely what you said is that India requires energy. We are an emerging economy. Our energy needs are rising rapidly. And I think we can, in fact, in the case of coal, we can compare ourselves with China, which also has a very huge requirement of energy. And although both India and China are very large importers of fossil fuels like crude oil and natural gas to meet their needs, still there is a huge reliance on coal. And of course, both countries, and especially India, of course, is committed to meeting its pollution emission requirements. But when you look at it, the per capita emissions of a country like India are still far less than developed countries. So if you compare those, in absolute terms it may be high, but on a per capita basis, our emissions are perfectly very, very low, in fact. So therefore, we have to utilize the resource, the natural resource that is available to us. And of course, as I said, over a long period of time, we can definitely try and phase out, but there are many, as I said, technological advancements to ensure that the emissions from coal production, from coal being used in power generation and in other ways is reduced to the extent possible. Administratively, the e-tender system seems to have ensured that the coal dispatch has gone up. What is being produced is being consumed also. How important has that been for this growth story when it comes to this commodity coal? I think that is really helped in the logistics of coal production, because the problem used to be that coal would pile up at the production sites. You would not be able to do the loadings, enough wagons would not be available. So this has enabled a kind of matching of the availability of wagons and the wherever the coal output is available, and therefore there's much quicker turnaround, much quicker movement, and that also helps as far as pollution is concerned, that it's not lying out in the open. It's not, the stocks are not being there, they are quickly being dispatched to wherever they are being used. Another argument is high grade versus low grade, and because we have captive low grade mines, we have to import a lot. How do we mitigate that? How do we have measures against that? Now we have been importing high grade coal because it is required in some of the power generating plants. You have high grade coking coal has been imported from Australia and other countries. But yes, the ways that I have mentioned, that is coal washeries, those are the main things. And as I said, there are many other technological advancements. I'm not an expert, so I wouldn't be able to tell you the details. But I believe that there are a lot of advancements where coal, even low grade coal, can be used to the extent possible. We're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से।
इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. The government today said that India's share of processed food exports and agri-exports has increased substantially from around 13% in 2014-15 to over 25% in 2022-23. In a statement, the Ministry of Food Processing Industries said that the food processing sector is one of the largest employment providers in the organized manufacturing sector, with over 12% employment in the total registered sector. It added that the food processing sector plays an important role in increasing farm income and creating off-farm jobs through on and off-farm investments in preservation and processing infrastructure. The ministry said that the government has undertaken several initiatives to give impetus to the development of the food processing sector in the country. The ministry has made significant achievements in its schemes during financial year 2023-24. Highlighting the achievements of the Pradhan Mantri Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme, the ministry said that a total of 51,130 loans have been sanctioned since January this year under the credit-linked subsidy component of the scheme. Sushma, the food processing industry, I remember, was a very focused industry at the commencement of this government in its very first term itself, and also one of the businesses that startup enterprises really hooked up to. It has grown substantially since then. What has been the importance really of food processing for the consumer? I think it's not just for the consumer but for the country, because food processing is very important for as far as exports is concerned. And secondly, the utilization of food products, whether it is food grains, whether it is horticulture, whether it is all kinds of fruits, vegetables, which are going to waste because we do not have enough adequate storage facilities. There has been a lot of talk over the past decades. You talked about the beginning of this tenure of this government, but even before that, there has been a lot of discussion over the need for cold chains, because in the absence of cold chains, you find vegetables and fruits are not able to be stored for a long enough period to enable them to reach consumers, especially abroad, and as well as within the country. Recently, we have had instances of high prices, for instance, of tomatoes, because the season before there was a huge crop, and those excess surplus crop could not be stored. And had it been stored, then probably you could have balanced out the shortfall in production of the next year. So there has been tremendous improvement. There have been certain schemes also, warehousing schemes that have been launched by this government to provide refrigerated facilities. So these are important, as you said, for the consumer, but also for exports. Because if we are to export and increase the share of processed foods, and I think this is an important data point, that processed food exports, the share has gone from 13% to 25%, and this is very significant because we can export the same product, whether it is a fruit or a vegetable or marine products. The same product, if it is exported as it is, the value is much less. But if you process it, then there is a value addition. The value for the exporter becomes much higher, and you become much more competitive in world markets. So this is an area that this government has been stressing on. In fact, there was the scheme to ensure that each district would focus on one particular export product, and that is only possible if you can provide this kind of warehousing and refrigerated facilities. So this is certainly a great development, and the number of loans for this kind of the micro food processing industries scheme is also significant, that these facilities, these incentives are actually being utilized by entrepreneurs. So fisheries have been the biggest beneficiaries in agri-exports when it comes to food processing?
fisheries of course has been there, but also you have seen in other areas, in other food products, not just in marine products has been there for many years, but it has expanded, as you rightly pointed out, but also in other food, fruits and vegetables, and even in wheat and rice products. Those are also being processed and exported. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला लगातार जारी है। आज 8वें सत्र में भी निवेशकों की सक्रिय भागीदारी बनी रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक यानी 0.5% ऊपर उठकर 72,410 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 124 अंक यानी आधी फीसदी की बढ़त लेकर 21,779 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी लिवाली तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.66% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.23% की वृद्धि हुई। The Indian equity market is poised to end the year in the green for the 8th time in a row despite a headwind such as rising interest rates, bank collapses in the US, geopolitical crisis emerging from two ongoing wars, rising crude prices and a slowdown in the Chinese economy. The Sensex gained 372 points or 0.5% to finish at 72,410. Nifty also rose by 124 points or 0.5% to close at 21,779. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.66% and the small-cap index climbed 0.23%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 24 companies appreciated, while those of 6 companies declined. Mahindra & Mahindra surged 2.8%, NTPC rose 2.6% and Power Grid gained 2.1%. On the other hand, Larsen & Toubro declined 0.7%, Wipro lost 0.3% and Ultra Tech Cement slided 0.2%. In sectoral indices of the BSE, 18 sectors logged gains while 2 sectors declined. Oil and gas rose 2.45%, energy climbed 2.18% and metal gained 1.6%. On the other side, IT fell 0.22% and industrials slipped 1.13%. The overall market breadth was negative as shares of 1,815 companies appreciated while those of 1,973 companies declined. A total of 132 companies remained unchanged. Let's have a look at the currency market now. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया आज 83 रुपए 17 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 100.7 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सुषमा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में लगातार कुछ सत्रों से कह लें कि 8वां सत्र आज चल रहा है जिसमें कि तेजी बनी हुई। इस तेजी के पीछे कोई खास कारण, आज की तेजी के पीछे क्या मुख्य कारण रहे? देखिए, ये जो अब साल का अंत होने जा रहा है, 31 तारीख आ रही है और कई सालों से ये हुआ है, ये रैली, एंड ऑफ द ईयर रैली जो कहते हैं, कुछ लोग इसको सांता क्लॉज रैली भी कहते हैं। और ये जो उभरती हवाएं समझ लीजिए और जो जोश जो है कि भाई साल का अंत आ रहा है और नई उमंगें आ रही हैं। लेकिन इस साल खास है क्योंकि ये जो रिकॉर्ड आया है, ये 72,000 पे सेंसेक्स आ गया है, निफ्टी भी 21,779 पे है। ये जो रिकॉर्ड आया है ये ज़रूर ख़ास है और इसको हमें बड़े गौर से देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस पूरे साल में जो बुलिश ट्रेंड आया है, ये बुलिश ट्रेंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से हमेशा हम ये देखते थे कि FIIs कितना धन हमारे स्टॉक मार्केट्स में डाल रहे हैं। लेकिन इस बार हालांकि FIIs अपना धन निकाल भी रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हमारी मार्केट्स में काफ़ी अपना जो है फेथ डाला है स्टॉक मार्केट्स में। और उनको अंदाज़न ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस बार जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स को बढ़ावा दिया है। ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोविड के ज़माने में, जब कोविड शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तो उस वक़्त
मार्च मार्केट क्रैश हुई थी, उसके बाद मार्केट बढ़ने लगी थी 6-7 महीने के लिए, और उस वक्त बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, नए डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हमारी स्टॉक मार्केट्स में आए थे, जो उनकी जो पैसा उन्होंने दूसरे एसेट्स में डाला था वो अब इस इक्विटीज में ले आए। तो इसका असर जो है, जो एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो अभी हमें देखने को आ रहा है। और ये रैली जो है ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और दूसरा FIIs का भी देखना कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Sushma, another characteristic feature, and before we go into that, let's go for a short commercial break. Please stay tuned on Market Mantra. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We're discussing with Sushma Swaraj, our expert on what's happening on the stock market. Sushma Ramchandran, I beg your pardon. So Sushma, tell us about the stimulus package announced by President Biden post-COVID, and that has created such an excess liquidity in the global market, and as an emerging market, we have been a recipient of FII investments. So we have had a bull run for 8 consecutive years. So how do you see year 9 rolling out because of this excess stimulus? We're talking about a multi-trillion dollar subsidy announcement by Joe Biden, the president of the US. How do you see India benefiting even further in 2024? Well, right now, of course, the Indian markets are looking at the Federal Reserve at its very now dovish stance. It is looking forward to, after a spate of interest rate hikes by the Federal Reserve, they are now looking forward to interest rate cuts. At least there will be a pause for some time, but then indication has been given by the Fed that by the end of the middle or end of next year, they will go in for interest rate cuts. Now, as a result of the interest rate hikes, you had money moving into the US because to want to take advantage of the higher returns available over there. Even then, we had, as you pointed out, the excess liquidity in the system. Even then, India, as an emerging economy, had a flow of funds, investments from the FIIs coming into this country. And we were perhaps one of the few emerging economies where the stock markets, and as you rightly pointed out, have been bullish for quite some time. The only, despite the geopolitical tensions of last year, and the impact on share markets all over the world, I think only India, the United States and Japan are the 3 countries where the stock markets have continued to show this bright picture. Everywhere else, markets, especially, for instance, in China, the Hang Seng Index have been going down. Other Asian markets, Europe, the Eurozone, of course, has been fairly depressed. So we have been kind of an outlier. And the reason for this, of course, it is definitely, we have been, as you say, a beneficiary of the liquidity that, there are these funds, floating around in the market. And, but we have benefited because of the macroeconomic fundamentals of the economy. Once again, despite the geopolitical tensions of last year, this economy has been able to achieve 7.8% growth in the second quarter of the current financial year. And this has given rise to the expectation that in the current fiscal, instead of 6.5, which was generally anticipated even by the Reserve Bank, the expectation is now 7%.
So we have benefited, but there is a reason that we have benefited. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिकी शेयर और बॉन्ड बाजार में कल आई जोरदार तेजी के साथ एशियाई बाजारों में भी आज लिवाली अच्छी खासी रही और प्रमुख शेयर बाजार 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। ब्याज दर में कटौती की संभावनाओं का निवेशकों पर अच्छा असर देखा गया है। हांगकांग का हिंगसेंग सूचकांक 2.46% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों में 1.36% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.56% ऊपर आ गया। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 0.42% नीचे चला गया। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.16% नीचे चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.2% की गिरावट थी। लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। Moving on to the US markets, a huge 2-month rally in bond prices powered by expectations that central banks will soon be cutting interest rates has rescued fixed income markets from an almost unheard of third straight year of declines. The Nasdaq Composite Index gained 0.02% while the S&P 500 slipped 0.04% and the Dow Jones Industrial Average lost 0.06%. Sushma, we're talking about excess liquidity, and usually what has happened in any macroeconomics has been that it's absorbed by fixed income instruments, which is why bonds are issued by the government to start with the help of the central bank. But this time around, what's happened is that investors who are more educated, they've got into equity markets. Yes, correct. And prices have gone up. And this is across asset classes, including gold, silver, any other commodity you can think of. Correct. How do you see the US really tackling it? They're talking about cutting the discount rate, the repo rate by Fed Reserve. How do you see them tackling in 2024? Well, I think the markets there are doing pretty well, and as it is, the bond yields have now come down. They had gone up earlier, and as you pointed out, the bond prices have gone up. Bond yields have come down. They're already in a good situation, so I don't think they're going to be looking at anything else, barring the signals that the Federal Reserve has been giving. And let's have a look at the oil market. A slide in crude prices below $80 a barrel triggered up to 9% rally in the stocks of oil marketing companies on December 28 as lower input costs would help widen the margins. In intraday trade, Brent crude was trading at $79.80 per barrel, while US West Texas Intermediate was trading at $74.20 a barrel when reports last came in. चले सराफा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए सोना समाचार तैयार किए जाने तक 26 रुपए बढ़त के साथ 63,704 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 80 रुपए घटकर 75,567 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में भी सोने में नरमी थी और ये $2,090.60 प्रति औंस के स्तर पर था। चांदी भी कमजोरी के साथ चल रही थी, $24.61 प्रति औंस पर। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Manoj. And before we close, a reminder of the headlines. Coal production in the country has shot up to over 664 million tons during the current financial year. Agri exports have increased substantially from around 13% in 2014-15 to over 25% in 2022-23. And NSE Nifty and BSE Sensex hitting new all-time highs. Sensex gains 372 points. Nifty closes at 21,779. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. I don't know why I was energized. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
मेरे पास मनपसंद जॉब तो है लेकिन पेंशन नहीं है। मेरा रिटायरमेंट नजदीक है पर मेरे पास पेंशन नहीं है। आप लोगों की परेशानी का समाधान है LIC's न्यू पेंशन प्लस, जो देता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के साथ गारंटीड एडिशंस और साथ ही पार्शियल विड्रॉल भी। इस पॉलिसी के निवेशित पोर्टफोलियो में निवेशित राशि का जोखिम पॉलिसी धारक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें। LIC हर पल आपके साथ।